गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक चिकन का रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल और टेस्टी है। मेरी सारे फैमिली को सबको ही पसंद है ये रेसिपी। आज मैं चिकन लॉलीपॉप का रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास चार पाँच चिकन लॉलीपॉप है। आपको जितना खाने आप ले सकते हो। आइडिया मैंने पापा को दिया 3 गार्लिक काटने और मैं जिंजर काट रही हूँ। देन गार्लिक और जिंजर दोनों को मिक्स करके पेस्ट बना रही हूँ। मैरिनेट के लिए ब्लैक पेपर पाउडर, रेड चिली पाउडर एंड कश्मीरी रेड चिली पाउडर, salt, then add the ginger garlic paste, vinegar, soya sauce and then mix it nicely and keep for 1 hour. ग्रेवी के लिए हमें चाहिए गार्लिक चॉप्ड, अनियन चॉप्ड एंड जिंजर चॉप्ड. After 1 hour of chicken marinade, add corn flour, maida, red chili powder, egg, salt and then mix it nicely and again keep it for 30 minutes. After 30 minutes, add refined oil and fry the chicken legs. It should be golden brown. Next, do the gravy work. It will be so tasty, guys. For the gravy, in a pan, add some oil. Let it hot. Then add chopped ginger and garlic. Fry it for 1 minute. Then add chopped onion. Fry it for 3 minutes. Then add Szechuan sauce. Mix it nicely for 2 minutes and add soya sauce. Mix it for again 2 minutes. Then add tomato sauce. Mix it all together for 3 minutes. Then add corn flour. Mix immediately for 1 minute. Then add all fried chicken legs. Mix it for 3 minutes. Add some coriander, some chopped onion, mix it nicely and it is ready. So guys, my chicken lollipop recipe is ready. Do try at home. It's so delicious.